Okay, is the screen visible? Yes, it is. राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं विथ द टॉपिक ऑफ डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसमें वी टॉक्ड अबाउट अनलिंक्ड जीन्स। वी बेसिकली गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट लिंक्ड जीन्स राइट नाउ एंड हाउ क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, के किस एलील के गैमीट्स बन सकते हैं या क्या डिफरेंट एलील्स के गैमेट्स बनेंगे भी या वो नहीं बनेंगे। सो वी गोना टॉक all about that today. So let me just open my notes up. Okay. सही। तो हमने जो एग्जांपल लिया था एट द एंड ऑफ द लास्ट क्लास, एंड वी आर गोना यूज दिस, वी आर गोना कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल टुडे। सो हमने क्या एग्जांपल लिया था? डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस और लिंक्ड जीन्स में ऑब्वियसली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स? दो जीन्स फाउंड इन द सेम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बट डिफरेंट जीन लोकाई। सो ये हमारी सबसे पहली जीन थी व्हिच वाज कोडिंग फॉर स्टेम हाइट। इस जीन के दो एलील्स थे, कैपिटल बी स्मॉल बी, डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील। डोमिनेंट ट्रेट टॉल था, रिसेसिव ट्रेट शॉर्ट था। उसी तरीके से अनदर जीन वाज कोडिंग फॉर फ्लावर कलर, कैपिटल टी डोमिनेंट एलील का डोमिनेंट ट्रेट ब्लू फ्लावर था एंड रिसेसिव ट्रेट फॉर द रिसेसिव एलील स्मॉल टी ग्रीन था। अब व्हाट वी डिड वाज एक हेट्रोजाइगस पेरेंट को एक होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ मेट किया था। अब होमोजाइगस रिसेसिव मतलब कि फॉर बोथ ऑफ द जीन्स इट शोज द रिसेसिव ट्रेट, which basically means small b, small b, small t, small t. But is this the way we used to write down the genotype when we talk about linked genes? No. नो। हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट्स को यूज करते हैं टू इंडिकेट कि इस ब्रैकेट में उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में जो एलील्स हैं वो इस ब्रैकेट में, और जो दूसरे क्रोमोसोम में एलील्स हैं वो इस ब्रैकेट में। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस एग्जांपल डाउन। इट बेसिकली लुक्स लाइक दिस। सो इनफैक्ट अभी तक डीएनए रेप्लिकेशन भी हमने नहीं की है। सो इट बेसिकली जस्ट लुक्स लाइक दिस राइट नाउ। You have the small b and small t allele, small b and small t allele, और homozygous recessive की मैं बात कर रहा हूँ। So now because this is linked genes, same homologous pair of chromosome लेकिन different gene loci. So इस allele और इस allele they belong to one gene. So one gene loci. This is another gene loci. However, these are two alleles but of the same gene. So never consider these as four genes. These are simply two alleles of the same gene and this is two alleles of another gene. तो homozygous recessive या कोई भी हो, लिंक जीन में जीनोटाइप हम क्रोमोसोम के हिसाब से लिखते हैं कि यू जस्ट सेपरेट द क्रोमोसोम्स, ताकि हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज पास डाउनवर्ड्स। सो ईदर इट इज स्मॉल बी स्मॉल टी और स्मॉल बी स्मॉल टी। So that's the genotype and this is the gamete which you answered earlier in the last class कि ये gamete होने वाला था। हम आज बात करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं इस बात से कि हेट्रोजाइगस में गैमीट प्रोडक्शन कैसे होगी। तो हम जीनोटाइप तो ऑलरेडी बता चुके थे हेट्रोजाइगस का, कैपिटल बी स्मॉल टी, स्मॉल बी स्मॉल टी। तो ये चीज क्लियर थी राइट कि हमने ये गैमीट जीनोटाइप कैसे लिखा था हेट्रोजाइगस पेरेंट का। Yeah, it's clear. ओके। अब हम आते हैं गैमीट्स प्रोडक्शन फॉर अ हेट्रोजाइगस पेरेंट। अब हमने एक पॉइंट बड़ा जरूरी लिखा था और वो ये था, इफ द जीनोटाइप इज कंप्लीटली होमोजाइगस, which either means completely homozygous dominant या completely homozygous recessive, क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कोई असर नहीं आएगा ऑन द गेमीट्स। सो इवन इफ इट डज हैपन, व्हिच इट कैन, क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो सकती है। बट द थिंग इज, even if both of these happens, it's going to have no effect on the gamete being produced when we talk about linked genes in dihybrid inheritance obviously. लेकिन what if the parent is heterozygous? तो क्या क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अफेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। एंड दैट्स व्हाट वी गोना लुक एट राइट नाउ। तो पहले केस में ये जो पहला एरो है इसमें हम लिखते हैं विदाउट क्रॉसिंग ओवर। सो वी आर गोना फोकस मोर ऑन क्रॉसिंग ओवर नाउ। जो भी चीजें हम करें ऑब्वियसली द सेम अप्लाइज टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन एक दूसरे तरीके से। बिकॉज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था कि द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पूरे के पूरे स्पेस प्लेसेस स्वैप कर लेंगे, जबकि क्रॉसिंग ओवर क्या था, सिर्फ एक पर्टिकुलर एलील स्वैप होगा। इज दैट राइट? Yeah. या तो वील फोकस ऑन द मोर डिफिकल्ट पार्ट, क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे एलील स्विच करते हैं इंस्टेड ऑफ द क्रोमोसोम स्विचिंग, दैट्स गोना बी मोर इजियर।
सो वी गोना बी फोकसिंग ऑन क्रॉसिंग ओवर, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट। अब अगर तो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, तो हमारे पास कौन से एलील्स हैं, कौन से क्रोमोसोम्स हैं? कैपिटल बी कैपिटल टी एंड स्मॉल बी स्मॉल टी। आई एम गोना ड्रॉ दिस राइट नाउ। कैपिटल बी कैपिटल टी एंड देन स्मॉल बी स्मॉल टी। अब जब मायोसिस वन और मायोसिस टू होता है, उससे पहले एक और स्टेप करते हैं। व्हाट्स दैट स्टेप कॉल्ड बिफोर मायोसिस वन, व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग द गेमीट्स? The It was interface? not really. It was a part of the S phase. एस The फेज में ये DNA प्रोसेस होता है। replication? बिल्कुल सही, डीएनए रेप्लिकेशन। इंटरफेज एंड ऑल ऑफ दोज फेजेस, ये सारे माइटोसिस में मोस्टली होते हैं, कि इंटरफेज एंड देन G2 एंड ऑल ऑफ दैट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मायोसिस, मायोसिस 1 एंड 2 से पहले इट्स डीएनए रेप्लिकेशन दैट टेक्स प्लेस। तो ये वाला क्रोमोसोम कैपिटल बी कैपिटल टी का रेप्लिकेट दिस एंड वी रेप्लिकेट दिस। सो दैट्स व्हाट वी गोना डू। सो कैपिटल बी एंड कैपिटल टी का एक क्रोमोसोम, अब नाउ यू हैव टू ऑफ दीज, and same applies for small b small t, जो पहले एक था, now you have two of these. Now if no crossing over takes place, ये example remains as it is, हम कोई भी चीज को switch नहीं करेंगे। So this line which I am going to draw right here, is this meiosis 1 or is this meiosis 2? This line, separation of homologous chromosomes, क्या ये meiosis 1 तक प्रोसेस हुआ या 2? So the separation is happening? या तो ये जो Yeah, लाइन है, दिस so इज it's शोन बाय meiosis 1. मायोसिस वन, बिल्कुल सही। बिकॉज मायोसिस वन क्या था? सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। वी आर नॉट सेपरेटिंग द क्रोमेटिड्स, वी आर सेपरेटिंग द क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच अदर। सो दिस राइट हियर इज मायोसिस वन। अच्छा, अब ये जो दो लाइनें हैं, दिस लाइन एंड दिस लाइन, व्हाट इज दिस? इज दिस मायोसिस वन स्टिल और इज दिस मायोसिस टू नाउ? Meiosis 2. बिल्कुल, बिकॉज नाउ meiosis 2 इज सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो meiosis 1 और meiosis 2 के बाद हमें चार गैमीट्स मिलते हैं। यहाँ से दो गैमीट्स, यहाँ से दो गैमीट्स, सो कैपिटल बी कैपिटल टी, देन कैपिटल बी कैपिटल टी, एंड देन टू फॉर स्मॉल बी स्मॉल टी, एंड देन ऑब्वियसली अनदर वन फॉर स्मॉल बी स्मॉल टी। क्या ये मेथड सही था meiosis 2 के बाद गैमीट्स प्रोड्यूस करने का? इज देयर समथिंग रॉन्ग विद इट? No, it's correct. ओके, सो नाउ आई एम गोना ड्रॉ अ लाइन, ताकि हम इन दोनों प्रोसेसेस को सेपरेट आउट कर दें, या दोनों सिचुएशंस को एक दूसरे से अलग कर दें। जब कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, दैट्स द फोर गैमीट्स जो फॉर्म हुए। अब लेट्स से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है इस केस में। और क्रॉसिंग ओवर होती भी कैसे है? कि हमने ये अज्यूम किया कि ये वाले क्रोमोसोम, ये सॉरी, ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड जो है, इसका ये वाला आर्म इस आर्म के साथ इंटरलॉक हो गया। अब अ प्लेस वेयर वी कॉल दिस अ बाइवेलेंट। बाइवेलेंट फॉर्म होना और इन द कियास्मा फॉर्म होना, यू रिमेंबर प्रोफेज वन जिसमें ये सब प्रोसेसेस हो रहे थे? Yeah. या तो उसमें व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसेस? कि देयर कुड और कुड नॉट बी द चांस दैट द आर्म्स ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स स्विच प्लेसेस, व्हिच ऑब्वियसली मींस कि जो जो एलील्स उन आर्म्स में थे सिस्टर क्रोमैटिड्स के, वो भी प्लेसेस स्विच करते हैं। तो अब स्मॉल बी यहाँ पे आ जाएगा एंड कैपिटल बी यहाँ पे आ जाएगा, व्हिच बेसिकली लुक्स लाइक दिस। तो अब क्रॉसिंग ओवर के बाद लेट्स सी कि मायोसिस 1 और मायोसिस 2 के रिजल्ट में डू वी गेट द सेम रिजल्ट एज दिस, और डू वी गेट अ डिफरेंट रिजल्ट? तो दिस line right here, again, meiosis 1 या meiosis 2? Meiosis 1. Meiosis 1, and obviously ये दो लाइनें would be meiosis 2। अच्छा, अब meiosis 2 के बाद चार gametes प्रोड्यूस है। gamete नंबर 1, gamete नंबर 2, gamete 3 and gamete 4। कैपिटल बी कैपिटल टी, स्मॉल बी कैपिटल टी, capital B small t and small b small t। Now notice this, इन चार गेमीट्स में से दो गेमीट्स तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहे थे, इवन दो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। फॉर एग्जांपल, कैपिटल बी कैपिटल टी, स्मॉल टी, weren't these gametes also being produced here? Yeah, they were. दे वर। मतलब कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, या इवन इफ अगर होती, these two gametes
प्रोड्यूस तो होने ही थे, बट नाउ लुक एट दिस, वर दीज टू गैमेट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर वाज नो क्रॉसिंग ओवर? No. नो। इसका मतलब दिस these two gametes are an example of a new allele combination being created, a new allele combination being created due to crossing over. Crossing over का प्रोसेस हुआ प्रोफेज वन में, उसकी वजह से एक नया एलील कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ। अब coming to the most important point of this entire topic right here. In this case, capital B, capital T, and then small b, small t. इन दो गेमीट्स का फर्टिलाइज होने का चांस हमेशा ज्यादा होगा। सो कैपिटल बी, कैपिटल टी, स्मॉल बी, स्मॉल टी gametes have a greater chance of fertilization. Could you tell me the reason why इनका ज्यादा चांस क्यों होता है और बाकी दो गेमीट्स का कम चांस क्यों होता है फर्टिलाइजेशन का? एनी आइडिया? Because because these are being formed more than new allele combinations. बिल्कुल सही, perfect. These are being formed more compared to the new allele combinations. अब let's suppose crossing over नहीं भी होती, फिर भी ये produce होते, होती, फिर भी ये produce होते. But the new allele combination, that's only produced if crossing over takes place. तो क्योंकि these two gametes have a greater production probability, or they are produced इन मोर अमाउंट्स, इनके प्रोडक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है, या अमाउंट जिसमें वो प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइज़ होने का चांस भी ज़्यादा होगा। इट्स द सेम केस इफ इन अ बैग यू ट्राई टू पिक आउट, let's say you have a bag and you have 10 balls in a bag. Now, if you have 10 balls, out of which 8 are red and 2 are blue, there's a greater probability of picking out the red ball randomly. Is that right? Yeah. वो इसीलिए क्योंकि रेड बॉल ज्यादा है। इवन दो आप ब्लू भी हम पिक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि रेड ज्यादा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सेम केस है, क्योंकि वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं these two gametes, उनके फर्टिलाइज होने का चांस ज्यादा है, which by the way also means कि the probability of an offspring being produced ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ दीज गैमेट्स, उस चीज की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है कि अगर ये गैमेट्स फर्टिलाइज करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने का चांस होगा वो भी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बिकॉज दे फर्टिलाइजिंग मोर ऑफ्टन। तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने का चांस भी इनकी ही वजह से ज्यादा होगा। ऑफ दी, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये दो गैमीट्स एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करेंगे, नहीं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अगर इन्वॉल्व करेगी आइदर ऑफ दीज टू गैमेट्स, तो ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी हायर कंपेयर्ड टू इफ यू इन्वॉल्व वन ऑफ दीज गैमेट्स। तो अब यहाँ पे लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन वी हैड अ मेल पेरेंट एंड देन वी हैड अ फीमेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट वाज होमोजाइगस रिसेसिव, तो स्मॉल बी स्मॉल टी गैमेट्स थे। मेल पेरेंट के जो गैमेट्स थे कैपिटल बी कैपिटल टी, स्मॉल बी स्मॉल टी, स्मॉल बी कैपिटल टी, कैपिटल बी स्मॉल टी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि इन दो गैमीट्स को हम लिख देते हैं एज मोर एंड इन दो को लिख देते हैं एज लेस। सो व्हाट आर वी डूइंग, वी जस्ट क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन द फोर गैमीट्स कि अच्छा ये दो ज्यादा बनेंगे, ये दो कम बनेंगे, बिकॉज वी वांट टू सी के एंड जो आउटकम है वो क्या आता है, एंड क्या इज देयर अ डिफरेंस व्हेन वी यूज डिफरेंट गैमीट्स, या इज इट ऑल द सेम थिंग ऑल टुगेदर। दैट्स व्हाट वी हैव टू सी। तो could you tell me the ऑफस्प्रिंग के जो जीनोटाइप्स प्रोड्यूस होते हैं बाय क्रिएटिंग अ टेस्ट क्रॉस, ओ सॉरी अ पनेट क्रॉस? Uh, this is on separate chromosomes, right? As in which one are you talking about? For all of them, like so, we're doing linked, right? Yeah, we're doing that. So ये सारे gametes के examples हैं, not the genotypes. These are all gametes. Oh, okay. So, will it be
capital B, capital T, and then small t, Okay, and then it's going to be small b, small t, small b, small t, right. and then a small b, capital T, small Mm-hmm. b, small t, Okay, and then capital B, small t, and then small b, small t. बिल्कुल सही. So creating genotypes when we talk about linked genes is the easiest part of all time. You just have to join the gametes together because this is one set of chromosomes, this is another set. You just have to join and write them together. Simple as that. So capital B, capital T, small t, so on and so forth. अच्छा इसके हम जीनोटाइप्स भी लिख देते हैं. इस केस में जीनोटाइप इज गोइंग टू बी टॉल एंड ब्लू. इस केस में द जीनोटाइप इज गोइंग टू बी शॉर्ट एंड ग्रीन क्योंकि इन दोनों केसेस में इट्स द रिसेसिव ट्रेट व्हिच इज बीइंग एक्सप्रेस्ड. तीसरे केस में इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट एंड blue, and चौथे केस में it's going to be tall and blue. Now I want you to closely look at these two phenotypes. पहला phenotype tall blue, दूसरा phenotype short green. Now remember that for a second and let's go back to the parent ka phenotypes. What are the parent phenotypes? Tall blue and short green. Is it the same as the parent? Yeah. It is. इसीलिए इन तरीके के इन टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को कहते हैं पेरेंटल टाइप offsprings. Now, why is that? Look at कि ये offsprings किन gametes से बने थे. Capital B, capital T, small b, small t. कैपिटल बी कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे गैमीट्स जिनकी फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन इन सब चीजों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी बिकॉज दे वर बीइंग प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ क्रॉसओवर हो रहा था या नहीं हो रहा था. तो क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और इन्हीं की वजह से ये ऑफस्प्रिंग बनाए हैं. दिस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग. डू यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम? यस यू डू. द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इज पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग. अच्छा अब क्यों इसे पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग बोलते हैं? बिकॉज जस्ट एज हमने अभी देखा दीज टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हैज द सेम फीचर्स as parents. So sometimes, even in the real life around us, if we see a child which looks like his dad or his or her mom, if her dad or and mom were at a younger age. So, for example, अगर हम किसी बच्चे की फोटो देखते हैं and we're like, oh, he's the same as his dad when his dad was younger or when his dad was in school. वो क्यों है? क्योंकि that offspring is a parental type offspring, has the same features as their parents. But now, what about these two offsprings? इन दो offsprings का नाम होता है recombinant type offsprings. Now, what are recombinant type offsprings? ये ऐसे offsprings हैं जिनके mixed features हैं compared to the parents. So let me write this mixed features compared to parents. जब parents tall blue and short green थे, they are completely mixed. ये short blue and tall blue, they're not exactly as the parent. तो इन्हें recombinant type offspring कहते हैं. Another reason why the word recombinant is used, क्योंकि ये offspring बनते हैं उस allele combination से जो कि प्रोड्यूस हुआ था बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर. तो एक तरीके की यू कुड थिंक ऑफ रिकॉम्बिनेशन हुई है एलील्स की. एलील्स आर कंबाइंड टुगेदर बट इन अ डिफरेंट वे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ क्रॉसओवर. तो रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफस्प्रिंग हेंस द नेम. अच्छा अब एक और चीज. नाउ इफ आई आस्क यू दिस, क्या सारे ऑफस्प्रिंग की प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी 25%? No. इफ नॉट तो फिर कौन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? The tall blue one. The- बिल्कुल द टॉल ब्लू वन एंड द शॉर्ट ग्रीन वन एज वेल. क्योंकि aren't these two both examples of parental type offsprings? Yeah. दे आर. तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन चारों ऑफस्प्रिंग्स की प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी इज नॉट 25% ईच. के चार हैं तो फिर एट वन सिर्फ एक प्रोड्यूस हो सकता है, सो 100 डिवाइड बाय 4 25. नो, इट्स नॉट 25% ऑफ ऑल. इट्स नॉट एन इक्वल चांस फॉर ऑल. द प्रोबेबिलिटी फॉर parental type offspring is higher compared to the probability for recombinant.
type offspring which is lower. And obviously, if you're still confused कि इनकी probabilities इसकी ज़्यादा क्यों है, इसकी कम क्यों है, it's because parental type ऐसे एलील से बना था जिनकी प्रोड्यूस होने की probability ज़्यादा थी. तो ज़्यादा probability of being produced, ज़्यादा probability of producing such types of offsprings. Lower probability of being produced, lower probability of producing recombinant type offsprings. ओके, तो यहाँ तक चीज़ क्लियर सारी? Yeah, it's clear. ओके, अब हम कब से बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में, wherein we are talking about linked and unlinked genes. And I think in the middle you two were confused, right? कि अगर हम linked genes की बात करें या unlinked की, which is why you asked that Yeah, question. yeah, I got confused. Yeah. Yes. So what we're gonna do right now is how to identify whether the genes आर लिंक्ड और अनलिंक्ड, क्योंकि एग्जाम में ये कंफ्यूजन आना बहुत कॉमन है. इट्स नॉट अनकॉमन एट ऑल. इट्स वेरी कॉमन टू फेस दिस प्रॉब्लम कि वी नो देयर इज डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस. हमें पता है दो जीन्स की बात हो रही है, बट हमें ये नहीं पता कि क्या ये दो जीन्स सेम क्रोमोसोम के पेयर पे हैं या डिफरेंट क्रोमोसोम के पेयर पे हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से हमें ये हिंट भी नहीं दे रहा एंड ना ही इज इट स्ट्रेट अप टेलिंग इट टू अस. तो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर दीज आर लिंक्ड or unlinked? Let's look at some tips and tricks. Let's first understand these using an example. So, in our example, let's say we have two genes. We have gene number one, and this gene codes for body color. अब इस जीन के दो एलील्स हैं. It has this capital B allele and the small b allele. Capital B allele का dominant trait is blue. Small b allele recessive allele का recessive trait है red. अच्छा, अब ये जो जीन नंबर 2 है, दिस जीन 2 कोड्स फॉर बॉडी साइज. आई जस्ट टुक रैंडम एग्जांपल्स. सो फॉर बॉडी साइज के लिए कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ, द डोमिनेंट रेट इज फैट एंड देन द रिसेसिव ट्रेट इज थिन. ओके, अब इन आवर एग्जांपल हमने एक हेट्रोजाइगस पेरेंट को मेट किया था विथ अ होमोजाइगस रिसेसिव. अब क्या ये कंप्लीटली हेट्रोजाइगस है? यस, कंप्लीटली हेट्रोजाइगस हम इसे लेंगे. अच्छा, हेट्रोजाइगस अगर कंप्लीटली है तो फिर दिस इज गोना बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एफ स्मॉल एफ. Now you might be thinking the way मैंने genotype लिखा है, you can obviously understand कि ये unlinked है because I didn't write this in the brackets. If I would have written in the bracket, then you would have understood कि ये linked है. But what if question में ये genotype ना दिया हो, which is most of the times the case, कि वो genotype लिख के नहीं देते. तो फिर how would we identify? That's what we're going to do right now. When you made a heterozygous with a homozygous recessive, so in this case homozygous recessive होगा small b small b small b small f. If and when all of the offsprings, so this is a condition, yeah, कि if all of the offsprings are produced in the same ratio, सारी ऑफस्प्रिंग्स का प्रोड्यूस होने का रेशियो एक ही है, 1:1:1:1:1. ये जो पहला वन है इज डोमिनेंट डोमिनेंट, दूसरा वर्ड इज डोमिनेंट रिसेसिव, तीसरा phenotype is recessive dominant, and चौथा is recessive recessive. Are you able to recall this phenotype की combination जो थी, phenotype phenotypic ratio जो था? मतलब like the homozygous and recessive kind of thing. Yeah, so what were the conditions in order to make this phenotypic ratio जो हमने याद किए थे? Yeah, so it was dihybrid, and it was dihybrid, and it was, I think, it was heterozygous into a homozygous recessive, I think, Uh-huh. and it was in like unlinked thing. Okay. And there was one more जो हमने new condition add की थी after studying about epistasis. Epistasis. क्या epistasis होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? Um, I think Take a guess.
होनी चाहिए आई थिंक. So the answer is nahi honi chahiye. Let me go back to this example right here. If I can go back to this. So look at this. Hetero times hetero. So this is 9331. If I can look at 1:1. Okay, it's fine. It's the same thing. तो अगर हम ये वाले रेशियो की बात करें या ये वाले की बात करें, the only difference is the parents. So इस केस में it's homo times hetero. इस केस में it's hetero times hetero. लेकिन what were the four conditions? Ignoring this, unlinked genes, dihybrid, and no epistasis. अब the way you could remember कि epistasis होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए is this. एपिस्टेसिस की डेफिनेशन को समझ के एपिस्टेसिस क्या था? दो जीन्स एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल में देखा था कि वन ऑफ द जीन्स इज कोडिंग फॉर फ्लावर कलर एंड वन ऑफ द जीन्स इज कोडिंग फॉर द फैक्ट कि क्या कोई पिगमेंट होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए. डू यू रिमेंबर दैट एग्जांपल? Yeah. तो अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन होगी जहां दो ही जीन्स हो और वो दोनों की दोनों जीन्स एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हो, दैट्स वे देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कंपटीशन कि कौन सी जीन कंट्रोल कर पाएगी फिनोटाइप को सक्सेसफुली. सो दैट्स वे यू डू नॉट गेट द परफेक्ट फिनोटाइपिक रेशियो 1:1:1:1. सो ऑलवेज रिमेंबर, ये रेशियो कब आएगा? होमो टाइम्स हेटेरो, डाइहाइब्रिड, एंड अनलिंक्ड जीन्स, एंड ऑब्वियसली नो एपिस्टेसिस. सो अब इफ द एग्जाम क्वेश्चन हैज गिवन यू के F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग बनती है उनका रेशियो ये है, एंड देन यू हैव ऑलरेडी पिक्ड आउट फ्रॉम द क्वेश्चन कि हेटेरो टाइम्स होमो हो रहा है, डाई हाइब्रिड हो रहा है, एंड नो एपिस्टेसिस है, वुड यू बी एबल टू फिगर आउट कि लिंक जीन्स है या अनलिंक जीन्स है? Could you repeat your question? Yeah. So what my question is कि let's say there's a question in the exam and this by this question it tells you कि जो F1 generation है उनका phenotype ये है. That's the first thing it tells you. Whenever you see this phenotypic ratio, आपका दिमाग जाना चाहिए to these four factors. Okay, and now from the question you already know okay they're talking about dihybrid, hetero times homo, and no epistasis. Would you be able to figure out कि unlinked genes है या linked genes है? Yeah, because like the conditions for the ratio are like that they're unlinked genes. Bilkul. Once you know this, your mind goes straight to these four factors, out of which one of these are unlinked. अगर तो ये phenotypic ratio है और ये तीनों चीजें मौजूद हैं, the fourth factor is automatically going to be applied कि unlinked genes automatically use होंगे. इसी point को हम expand करते हैं and then let's talk about linked versus unlinked. And in the end, if all of this gets a bit confusing, in the end, हम क्या करेंगे? We'll talk about some strategy के एग्जाम में how should we approach the question के हमें कौन से सिनेरियो में कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी. We'll talk about that in a moment. But before that, let's talk about linked versus unlinked. अच्छा, so अगर in the exam question you see कि there is a homozygous times a heterozygous. Now, homozygous recessive या dominant, it needs to be homozygous with a heterozygous. Phenotypic ratio बनती है 1:1:1:1. Now you know कि they're talking about unlinked genes, ऐसे genes जिनमें दो genes की inheritance हो रही है. So dihybrid, they're talking about no epistasis. That's your three conditions right there. And another scenario में, if you have hetero times hetero, and the same three conditions. Dihybrid, unlinked, no epistasis. 9, 3, 3, 1. अब अगर हम इसको कॉपी करता हूं मैं and then we are going to paste the same thing right here. Right, we're gonna paste the same thing right here. I'm just gonna paste this. Okay. अब क्या करने जा रहा हूं मैं? I am just going to change one of the characteristics. You see this? I'm just erasing unlinked and I'm writing linked right here. अगर unlinked से linked condition change हो गई, this homozygous times heterozygous का phenotypic ratio will not be 1:1:1:1 and hetero times hetero का phenotypic ratio will not be 9:3:3:1. Does that make sense? Yeah, it does. Okay. Now let's talk about strategy. एग्जाम में हम कैसे अप्रोच करेंगे?
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रैटेजी। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू लुकिंग एट द क्वेश्चन इज, सबसे पहले तो हमें ये देखना है ना कि अगर डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस है या डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस नहीं है। अगर तो, सो लेट मी राइट दिस, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यस और नो। Let's say if there is no dihybrid inheritance, तो फिर there is no 1:1:1:1, there is no 9:3:3:1, there is no linked unlinked, no epistasis, nothing. This is monohybrid inheritance. तो फिर हम monohybrid inheritance के concepts use करेंगे. But what if हमारा आंसर yes आता है? Then we move on to the second question. क्या epistasis involved है? So again, yes or no. अगर एपिस्टेसिस इन्वॉल्व है या नहीं है, जस्ट सर्कल योर आंसर। सो लेट्स से हम कहते हैं कि एपिस्टेसिस इन्वॉल्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द पेरेंट्स? इफ द पेरेंट्स आर हेटेरो टाइम्स हेटेरो, और इफ द पेरेंट्स आर होमो टाइम्स हेटेरो। हेटेरो टाइम्स हेटेरो में दो पॉसिबिलिटीज हैं, 9:3:3:1 और नॉट 9:3:3:1। सो इस केस में इट्स अनलिंक्ड, एंड इस केस में इट्स लिंक्ड। आई एम जस्ट गोना एक्सप्लेन दिस एंटायर टेबल इन जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस। होमो टाइम्स हेटेरो में भी दो पॉसिबिलिटीज है, 1:1:1:1 एंड नॉट 1:1:1:1। सो दिस इज अनलिंक्ड and this is linked. Acha, tell me this. In IGCSE, did you study about dichotomous keys? I know it's been a while since IGCSE, but do you remember that dichotomous keys? Do you get 3 to 5 Yeah, I questions? think, yeah, like the arrows and the diagram, like, yeah, Yes, yeah, yeah, I yes. get it. Yeah, yeah, I Yeah, do. तो dichotomous keys ऐसे काम करते थे कि you used to have, let's say, 4 or 5 questions. So let's say the first question used to be, is the organism having 2 pairs or 3 pairs? So if it had 2 pairs, it would give you the answer to the organism you were looking for. If it had 3 pairs, then यहाँ पे लिखा होता था, go to question 2. Then you would Yeah, yeah, I do remember. then you would do question 2. So it's sort of, and I always use this sentence when I explain dichotomous keys for those in IGCSE के, think of it as a treasure hunt. अगर 2 pairs of legs है, हमें अपना आंसर मिल गया। 2 pairs of legs नहीं है, move to question number 2, then 3, then 4 and so on. तो हमने यहाँ पे एक sort of हमारी dichotomous key बना ली। क्वेश्चन नंबर 1, क्या डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस है? अगर तो डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस नहीं है, दैट्स इट, कंसेप्ट्स ओवर, वी गो टू मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर तो है, गो टू क्वेश्चन नंबर 2, क्या एपिस्टेसिस है या नहीं है? अगर एपिस्टेसिस है, यू स्टॉप राइट हियर, यू डोंट गो टू नंबर 3। if there is epistasis, you have to solve it manually, you have to make the Punnett cross manually, क्योंकि ये concepts नहीं लगते if there is epistasis. So if there is epistasis, you stop right here. अच्छा, अगर एपिस्टेसिस नहीं है, मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, पेरेंट्स कौन से? हेटेरो टाइम्स हेटेरो है, दीज आर योर 2 पॉसिबिलिटीज। होमो टाइम्स हेटेरो है, दीज आर योर 2 पॉसिबिलिटीज। तो ये क्लियर हुआ कि हम इस टेबल को, इस की को यूज कैसे करेंगे? Yeah, it's clear. Okay. As soon as you get an answer to your question which is positive, so let's say dihybrid mein, or sorry, the opposite. So let's say dihybrid mein, you wanted it to be yes so that you can move on. But what if it's no? You stop right here. अब ये गलती you shouldn't do कि dihybrid का answer you got as no and you're still moving to question 2. It wouldn't make sense. क्योंकि epistasis works with 2 genes. Monohybrid is 1 gene, doesn't match, right? So as soon as you get an opposite answer, you stop right there. If you don't, keep moving on and on until you get to your final 4 answers. Okay, so that basically sums up epistasis, dihybrid, linked, unlinked, monohybrid, etc. etc. Up, let's move to another part of the chapter, which basically talks about the different genes which you should know of. So the first gene we are going to talk about is called the TYR gene. Up, first point, TYR जीन एक ऑटोजोम पर प्रेजेंट होती है। तो अगर हम इस TYR जीन की इनहेरिटेंस की बात करें, क्या ये ऑटोजोमल इनहेरिटेंस होगी या क्या ये सेक्स लिंकेज होगा? Autosomal inheritance. बिल्कुल। So if it's present on an autosome, this will be
autosomal inheritance. Okay. Let's take an example. मैं draw कर देता हूँ. Just a gene. Obviously, this does not look like a chromosome, but assume it's a chromosome. We have this line right here, and this line we represented as the TYR gene. TYR gene जो होता है उसको symbol use mostly किया जाता है to represent is capital A. अब ये TYR जीन कोड किसके लिए करती है? दिस कोड्स ऑब्वियसली सारे जीन्स एक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं. दिस पर्टिकुलर जीन भी एक प्रोटीन के लिए कोड करती है, नेमली द टायरोसिनेज एंजाइम. अब व्हाट गिव्स इट अवे कि ये एक एंजाइम है इज द नेम ऑफ द एंजाइम इटसेल्फ, एएसई. जो नामों के एंड में एएसई आता है, व्हाट आर दोस सब्सटेंसेस कॉल्ड? Enzymes. एंजाइम्स, बिल्कुल. कार्बोहाइड्रेसेस, प्रोटीएजेस, एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज, सब के एंड में एएसई आता है, तो वो सारे के सारे एंजाइम्स हैं. सारे जीन्स कोड करते हैं फॉर अ प्रोटीन. एंड दिस एरो व्हिच आई हैव ड्रॉन राइट हियर, इट्स नॉट दैट सिंपल टू मेक द प्रोटीन. बाय द वे, यू शुड नो दिस कि यू हैव ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, एंड ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है? देयर आर टू स्टेप्स आफ्टर दिस. दिस इज Uh, एएस. Translation, I think. नहीं नहीं देयर इज अ that स्टेप बिफोर दैट. uh, So remember, exons transcription. are removed, introns are joined. Yeah, I forgot the name of the process. I think. RNA splicing. Yes, it was splicing. Yeah, yeah, Yes, RNA splicing. Yeah. So transcription के बाद, and you could every single time, every single day of the week, you could accept. Sorry, क्या कह रहा हूँ? You could expect this question to come into a P4 exam. Okay, how do you produce a tyrosinase enzyme from a TYR gene? So they're basically asking you protein synthesis. कि पहले transcription होती है, कौन transcription में मदद करता है? You have the helicase enzyme, all of that stuff. RNA splicing होती है, exons are removed, introns are joined together. Then you talk about alternative RNA splicing, वो भी चीज़ होती है. फिर ट्रांसलेशन राइबोसोम में होती है, द ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, जो सारी चीज़ें होती हैं. फिर जो अमीनो एसिड्स आते हैं, एंड द एंटायर प्रोसेस बेसिकली टू मेक अ प्रोटीन. तो दिस एरो रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ द स्टेजेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. सो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए स्प्लाइसिंग एंड ट्रांसलेशन. इसके प्रोसेस में हमें क्या मिलता है? ये टायरोसिनेज एंजाइम. अब यू नीड टू रिमेंबर टायरोसिनेज एंजाइम ऑपरेट कैसे करता है, मतलब इसके सबस्ट्रेट्स कौन है और इसके प्रोडक्ट कौन है. तो टायरोसिनेज, ओके, ओ सॉरी, टायरोसिन. अब टायरोसिनेज एंजाइम पहले जिस रिएक्शन पे काम करता है इज, इसका सबस्ट्रेट का नाम इज टायरोसिन और टायरोसिन. टायरोसिन से प्रोड्यूस होता है अ प्रोडक्ट कॉल्ड डोपा. Do you need to remember the full form? No, it's extremely, extremely long, and there's no need to remember it. This is an acceptable acronym. You can write it in the exam. Tyrosin से you make dopa. अगला जो रिएक्शन होता है, दिस इज ऑल्सो कैटेलाइज्ड बाय द टायरोसिनेज एंजाइम. सो दिस इज बेसिकली समथिंग न्यू, कि दो रिएक्शंस एक ही एंजाइम कैटेलाइज कर रहे हैं. तो पहले टायरोसिनेज कन्वर्ट करता है टायरोसिन को इनटू डोपा, एंड देन फ्रॉम डोपा इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू समथिंग कॉल्ड डोपाक्विनोन. सो QUINONE, डोपाक्विनोन. अब डोपाक्विनोन क्या है? Dopamine is the name of a melanin pigment. So have you heard of the word melanin before? Yeah, I have. Yeah, तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कोड करता है एसेंशियली, इट्स अ पार्ट ऑफ अ मेलानिन पिगमेंट. और ये पिगमेंट क्या करता है? दिस पिगमेंट अफेक्ट्स द स्किन कलर, आइरिस कलर एंड द आई कलर. सो बेसिकली हर दूसरे इंसान या हर दूसरे बंदे की आई कलर डिफरेंट क्यों होती है? बेसिकली नॉट द आई दैट इट्स डिफरेंट, दैट ब्लैक बॉल जो कि आई में होता है दैट रिमेन्स द सेम, बट द पार्ट सराउंडिंग द आई दैट्स कॉल्ड द आइरिस. और हर किसी में आइरिस का कलर या तो सेम होता है या तो डिफरेंट होता है. दिस पिगमेंट राइट हियर अफेक्ट्स कि वो आइरिस का कलर क्या होगा. So it does not only affect the iris color and the skin color, but other examples as well. But for now, we'll just use these two. Okay, affects the skin color and iris color.
अब जो हम चीज की बात कर रहे थे, दी इंटरेस्टिंग पार्ट, कि एक ही एंजाइम दो रिएक्शंस को कैसे कैटालाइज कर सकता है। इट्स बिकॉज द टायरोसिनेस एंजाइम का जो एक्टिव साइट है ना, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टू सबस्ट्रेट्स, डोपा एंड टायरोसिन। तो डोपा एंड टायरोसिन के बेसिकली शेप्स ऐसे हैं कि टायरोसिनेज उन दोनों को अकोमोडेट कर सकता है, दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। सो द एक्टिव साइट, फिर जो कि ये चीज मोस्टली होती नहीं है। सो द एक्टिव साइट ऑफ tyrosinase enzyme is complementary to both number one tyrosin and number two dopa। अच्छा जी, अब लेट्स लुक एट अ सिचुएशन जहां पे इसी TYR जीन को म्यूटेट कर दिया जाए। अगेन म्यूटेशन बहुत सारी चीजों की वजह से होती है, रेडिएशन की वजह से, रैंडम म्यूटेशन बगैर किसी ट्रिगर के रैंडम म्यूटेशन भी हो जाती है बॉडी में। these are stuff you learned in AS in chromosomes and DNA के चैप्टर में। बट लेट्स अज्यूम कि अगर TYR जीन म्यूटेट हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सो आई एम गोना राइट हियर, what happens if the TYR gene is muted? But before that, let me ask you this. एक एंजाइम के लिए क्या उसका शेप जरूरी होता है, या अगर हम थोड़ा बहुत उसका शेप चेंज कर भी दें, डज इट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस फॉर एन एंजाइम? No, the shape is important. द शेप इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि शेप की वजह से ही एक एक्टिव साइट प्रोड्यूस होती है। शेप को चेंज कर देंगे तो एक्टिव साइट चेंज हो जाएगा उसका शेप, और एक्टिव साइट का शेप चेंज होगा तो फिर इट विल नो लॉन्गर बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट, व्हिच मींस कि रिएक्शन नहीं होगा। तो लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंस इफ दिस इज म्यूटेटेड। अगर इसको म्यूटेट कर दें, मतलब कि इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेस्ड सीक्वेंसेस है, लेट्स से एक रैंडम एग्जांपल में ले रहा हूँ, ACGT TACG, अगर ये एक ही जगह इफ वी पुट अप अ टी है, पहले जो अमाइनो एसिड ट्रांसलेट होता है बिकॉज ऑफ दिस ए एंजाइम, इज दिस गोना बी डिफरेंट टू द अमाइनो एसिड ट्रांसलेटेड बिकॉज ऑफ दिस टी न्यूक्लियोटाइड बेस राइट हियर? Yeah, it will be. इट विल बी। तो क्या पॉलीपेप्टाइड चेंज चेंज होगा? Yes. इट विल, जिसकी वजह से अलग किस्म के अब बॉन्ड्स बनेंगे इन द टायरोसिनेज एंजाइम। यू हैव लर्न दिस कि व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो फिर पॉलीपेप्टाइड चेन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर यू हैव द टर्शियरी स्ट्रक्चर, देन द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इफ यू चेंज एन एंटायर अमाइनो एसिड, दैट चेंजेस द होल थिंग ऑल टुगेदर, क्योंकि अब अलग अलग किस्म के बॉन्ड्स बनना शुरू होंगे और अलग अलग किस्म के स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएंगे। And as you just said, structure एक enzyme का बहुत ज़रूरी होता है, which is why if you have a mutated TYR gene, it is going to code for a non-functional टायरोसिनेज एंजाइम। टायरोसिनेज एंजाइम प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो नॉन फंक्शनल होगा। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अभी तक कि फंक्शनल क्यों नहीं होगा, प्रोड्यूस तो वो हो रहा है, वो इसीलिए बिकॉज इट्स नॉट, और यू कुड से नो लॉन्गर कॉम्प्लीमेंट्री टू डोपा और टायरोसिन। तो क्योंकि हमने शेप चेंज किया, तो एक्टिव साइट का भी ऑब्वियसली शेप चेंज हुआ बिकॉज एक्टिव साइट इज पार्ट ऑफ द एंजाइम। तो इट्स नो लॉन्गर कॉम्प्लीमेंट्री टू डोपा और टायरोसिन, तो इट्स अ नॉन फंक्शनल टायरोसिनेज एंजाइम। अब एक जरूरी चीज, क्या हर दफा ऐसे होता है कि नॉन फंक्शनल टायरोसिनेज एंजाइम बनता है? मतलब इज दैट हाउ द TIR जीन रिस्पॉन्ड्स टू एवरी सिंगल म्यूटेशन? नहीं, कुछ म्यूटेशंस की वजह से नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता है, कभी कभार तो एंजाइम बनता ही नहीं है, और नॉट देयर एट ऑल। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज म्यूटेटेड TYR जीन से कभी कभार नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता है, एंड समटाइम्स द एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड एट ऑल। अब लेट्स लुक एट दीज टू केसेस, नॉन फंक्शनल एंड द एंजाइम नॉट बीइंग देयर। क्या दोनों केसेस में से किसी केस में भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा?
No. नो। तो क्या एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा? No. ओके। एंड इफ देयर इज नो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बीइंग फॉर्म्ड, कैन वी से कि कोई मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा? No. Yeah. No melanin will be produced. No melanin will be produced. Yeah. So we'll write no melanin pigment is produced because let me go back to this again. इस पूरे रिएक्शन का फायदा क्या था कि टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपाक्विनोन, क्योंकि हमें मेलानिन बनाना था जो कि स्किन और आई कलर के लिए जरूरी था। अब जब यही जीन म्यूटेट हो गया व्हिच यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस एंजाइम, वन सेकंड, टायरोसिनेज, या, व्हिच यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस एंजाइम, तब टायरोसिन से डोपा भी नहीं होगा, डोपा से डोपाक्विनोन नहीं होगा, डोपाक्विनोन से मेलानिन नहीं बनेगा। सो इन द एंड नो मेलानिन पिगमेंट इज प्रोड्यूस्ड। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कंडीशन कुछ लोगों में एग्जिस्ट करती है जहां पे मेलानिन पिगमेंट उनकी बॉडीज में प्रोड्यूस नहीं होता है बिकॉज ऑफ अ म्यूटेटेड टीवाईआर जीन। इस कंडीशन को कहते हैं एल्बाइनिज्म और एल्बिनिज्म। सो हैव यू सीन पीपल व्हिच हैव सम सॉर्ट ऑफ वाइट कलर के पैचेस होते हैं उनकी स्किन पे? Yeah, I have. या तो उन केसेस में उन लोगों को एक कंडीशन होती है विच इज एल्बिनिज्म। अब एल्बिनिज्म इज अ रिसेसिव कंडीशन या यू कुड कॉल इट अ रिसेसिव ट्रेट which basically means that the mutated TYR gene is the recessive allele। इसीलिए डोमिनेंट एलील की वजह से डोमिनेंट ट्रेट होता है कि यू हैव अ मेलानिन पिगमेंट एंड नो एल्बिनिज्म। रिसेसिव एलील की वजह से रिसेसिव ट्रेट होता है, यू हैव एल्बिनिज्म। तो ये एक रिसेसिव कंडीशन है। और इस कंडीशन का कॉन्सिक्वेंस मतलब फिनोटाइप हमें क्या मिलता है कि नाउ देयर इज अ पेल स्किन एंड आई और हेयर कलर। सो जो कलर होता है स्किन का वो कभी कभार पेल हो जाता है, कभी कभार हेयर कलर पेल हो जाता है, आई कलर पेल हो जाता है, दैट्स बेसिकली एल्बिनिज्म। अच्छा, अब एक आखिरी पॉइंट। हमने ये शुरू में देखा था कि ये जीन एक ऑटोसोम पर प्रेजेंट है, तो क्या ये मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करेगा? Yes. एंड वो कौन सी लिंकेज होती है जहां पे मेल एंड फीमेल अनइक्वली अफेक्ट होते हैं? The sex-linked inheritance. बिल्कुल, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और इस इनहेरिटेंस की हम बात करेंगे अगली क्लास में व्हेरेइन वी विल डिस्कस अगेन अबाउट द फैक्टर 8 जीन। सो बेसिकली योर सिलेबस एडवाइजेस यू टू एक्सप्लेन दिस टू टाइम्स ताकि ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाए। वन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑटोसोमल वर्सेस दूसरी टाइप की इनहेरिटेंस, एंड यहाँ पे व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग ईच जीन इंडिविजुअली वो क्या करता है, म्यूटेशन कैसे होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वी जस्ट बेसिकली लुकिंग इनटू इट इन मोर डिटेल। सो लेट मी राइट द लास्ट पॉइंट हियर। Because the TYR gene is present on an autosome, it affects the male and the female equally, which obviously means कि अगर मेल होगा या फीमेल होगा, it does not matter, you're gonna get three genotype के combinations, capital A, capital A, capital A, small a, small a. Homozygous dominant, which means that there is normal melanin production. Heterozygous, still normal melanin production. Small a, no melanin production. Albinism, which is the recessive condition. क्या ये कैरियर के तौर पे एक्ट कर सकता है फॉर द एल्बिनिज्म, हेटेरोजाइगस? Yeah. इट कैन, बिल्कुल। सो नेवर थिंक ऑफ कैरियर बनना का मतलब होता है कि सिर्फ हम जो सेक्स लिंकेज होती है उसकी बात कर रहे हैं कि वो जीन्स जो ऐसे एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पे होते हैं सिर्फ उनमें कैरियर की पॉसिबिलिटी होती है, नहीं। कैरियर सिंपली मींस यू डोंट हैव द कंडीशन येट बट यू कैन पास द कंडीशन टू समवन एल्स। और एग्जैक्टली यही यहाँ पे हो रहा है। he doesn't have the condition, this is no albinism, and बिल्कुल सही तरीके से मेलानिन प्रोडक्शन हो रही है। बट इमेजिन कि अब अगर मेटिंग के दौरान एंड जीनोटाइप सॉरी गैमीट की फर्टिलाइजेशन के वक्त ये सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नीचे पास हो जाए ड्यूरिंग मायोसिस, तो फिर क्या होगा कि अब एल्बिनिज्म होने का चांस होगा प्रोवाइडेड कि दूसरा भी एक स्मॉल एलील। So that's it for today. Any confusions, any doubts? No, it's clear. Okay, so could you give a summary of what we did today? Yeah, so at first we basically discussed another like case of linked
like linked to dihybrid inheritance, and then basically we talked about how we're going to differentiate in the exam question about if the question is about unlinked genes or linked genes, and then basically we learned about the TYR gene, in which basically it is like an autosomal recessive disorder, and like how the TYR gene basically produces the tyrosine enzyme, and it is like involved in the pigmentation of hair, skin, and the iris of the eye. And if the mutated TYR gene is produced, then either less pigment or no pigment at all is produced. So like so the Just wait just 1 second. You said that either if it's like mutated, so you said either less pigment or no pigment is produced. That's what you said. yeah. तो टेक्निकली नो पिगमेंट प्रोड्यूस होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, नॉन फंक्शनल या तो है ही नहीं। अगर तो एंजाइम है ही नहीं, तो मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर वो फंक्शन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो उस केस में भी नई नई पिगमेंट प्रोड्यूस होना चाहिए। Yeah, okay. सो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही पॉसिबिलिटी है, नहीं है। Okay. So no melanin is produced, and yeah, because like there's no enzyme substrate complex, and then no product enzyme product complex. Yeah, and Yeah, एंड देन व्हाट इज़ द कंडीशन दी थी वो जो मेलानिन नहीं है? albinism. एल्बिनिज़म, बिल्कुल सही। ओके। सो वील कीप इट टिल हियर टुडे, और फिर हम इसको अगली क्लास में इंशाल्लाह करते हैं। Oh, okay. Also, sir, can I just यस। ask, like, I've signed up also for like AS Bio. Mhm. Like, so I'm gonna give AL Bio this May June. So when should I Yeah. start like preparing for AS? Like from now, or should I just focus on my A2 first, because like I have exams coming up from 17th Feb. No, I think you should start right now, क्योंकि एएस से 2 चीज़ें होंगी व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ, कि यू विल बी एबल टू गेट अ मोर स्ट्रॉन्गर होल्ड ऑन योर कंसेप्ट फॉर ए2 इस वक़्त। सो यू सी आज की क्लास में भी देयर वर अ लॉट ऑफ एएस की चीज़ें, एंड प्लस एएस की तैयारी भी होती जाएगी, बिकॉज़ 3 महीनों में यू कांट डू 11 चैप्टर्स ऑल ओवर अगेन। इवन इफ यू हैव टू रिवाइज़, यू स्टिल हैव टू डू पास्ट पेपर्स एंड टॉपिकल्स एंड वो चीज़ें। सो जस्ट स्टार्ट एट द अर्लीएस्ट। Okay, thank you. ऑलराइट। अल्लाह हाफ़िज़। I love this. Thank you so much.